ट्राइड्स और ट्राइड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी भी पर्टिकुलर जियोग्राफिक लोकेशन से बिलोंग करता है, वी जनरली से कि इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक होगा। If the organism is belonging to a particular geographic location having a definite set of climatic conditions, temperature, precipitation, ठीक है, humidity and everything, we say all of the organisms living there must have a unique characteristic. They are different, obviously, but they must possess some kind of unique characteristics which might be different from other organism in other geographical location. Am I clear? तो जो जिस जियोग्राफिक लोकेशन में है उसी हिसाब से वहां के सारे ऑर्गेनिजम्स विल हैव अ डेफिनेट कैरेक्टर और अ ट्राइड। A different geographical location, a definite character different or a different trait based on the geographical factors, and there are some rules associated to these factors, and those rules are known as ecogeographic rules. Am I clear? The first rule is Allen's rule. पहले सिर्फ समझो। The first rule is Allen's rule. Allen's rule is saying that higher the latitude, मतलब दिस इज अर्थ, दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री, ऊपर जाएंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर, 1 डिग्री 2 3 4 5 अल्टीमेटली 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। जिन्होंने ये ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है मैं उनके लिए बता रहा हूं, जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है। तो हायर लैटिट्यूड का मतलब ऊपर ऊपर ऊपर, हमें क्लियर, बोथ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। हायर लैटिट्यूड, लोअर लैटिट्यूड का मतलब नीचे टुवर्ड्स इक्वेटर। तो Allen's rule specifies that higher the latitude, smaller is the length of appendages. Appendages means limbs, arms. बात समझ में आ रही है? हाथ पांव का लेंथ क्या है? छोटा है। आप जनरली ये बता सकते हो कि अगर कोई हायर लैटिट्यूडनल ऑर्गेनिज्म है, दैट विल हैव स्मॉल अपेंडेजेस, दैट विल हैव स्मॉल लिम्स, लेग्स, आर्म्स एटसेट्रा, टेल्स वगैरह। बात समझ आ रही है? Why? The reason is given by Allen, because more the surface area, more will be the heat loss. Less the surface area, less is the heat loss. In order to prevent the heat loss in the higher regions, because it is the colder region, because it is the cold and dry. This is hot and humid. This is hot and humid. They have to release heat from their body. Therefore, their appendages must be long, so that more release are there, they will be cool. And if you are from upper latitudes, higher latitudes, ठीक है, in the cold and dry conditions, your length of limbs, your length of arms, your length of tail will be short because of the reason what? You have to prevent the heat loss. More the body, more the heat loss, more the length of the limbs. ठीक है, अभी हम इसके बाद एक और रूल पढ़ेंगे. That seems to be contradictory to this Allen's rule, but it is not. We will understand how. ठीक है, तो what's Allen's rule? Higher the latitude, shorter the appendages. Shorter the appendages. ठीक है, तो latitude is inversely proportional to length of appendage. If latitude increases, length of appendages decreases. If it increases, this decreases. With exception, exceptions are there. कोई भी रूल पढ़ेंगे हम, it's not 100%. Ecogeographic rules are thumb rules. Based on experiences, based on conventions. This is not 100% scientifically proven. There are some exceptions, but generally the rule is like this. Allen says, higher the latitude, shorter the length of the appendix. Am I clear? And the reason is to prevent heat loss. The possible reason is to prevent heat loss. Clear? Second rule. ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ये वाला रूल. आपको लगेगा इट इज कॉन्ट्रडिक्टरी टू एलेन्स रूल, बट है नहीं. Bergmann's rule. Second ecogeographic rule is Bergmann's rule. Bergmann rule says higher the latitude, higher the latitude, more the body size. More the body size. है कि नहीं है? For example, we have polar bear. We have कहाँ? हायर लैटिट्यूड्स. वी हैव कोडियाक बियर, दैट्स इन अलास्का, हायर लैटिट्यूड. अब बियर की स्पीशी हम देखेंगे नियर इक्वेटर या लोअर लैटिट्यूड में, लाइक स्लॉथ बियर, लाइक ब्लैक बियर, वेरी लेस इन साइज एज कंपेयर टू द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द हायर लैटिट्यूड. साइबेरियन टाइगर, कंपेयर इट विद सुमात्रन टाइगर और बंगाल टाइगर, वेरी लार्ज इन साइज, बॉडी साइज. एम आई क्लियर? ठीक है. वी हैव फॉर एग्जांपल एम्परर पेंगुइन्स दैट आर ओनली फाउंड इन अंटार्कटिका. ठीक है. वी हैव अदर टाइप ऑफ पेंगुइन दैट इज फाउंड इन गैलापागोस आइलैंड. सुना ना हम कभी?
Galapagos Island in the Pacific Ocean is a part of Ecuador. Ecuador is a country in South America. ठीक है, Galapagos is the same island from the Charles Darwin starts its theory of evolution. तो उधर हमें पेंगुइन्स मिल रहे हैं और उन्हीं की स्पीशी के दूसरे पेंगुइन हमें मिल रहे हैं अंटार्कटिका में, हायर लैटिट्यूड्स में. दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एंड लोअर लैटिट्यूड में दे आर द स्मॉलेस्ट. ठीक है, इट इज ट्रू, बट इजंट दिस कंट्राडिक्टिंग एलेन्स रूल? Allen's rule is saying larger the appendage is more heat loss, but Bergman is saying higher the latitude there is more body size, so there should be more heat loss. There should be more heat loss, so the species should not survive. Am I clear? अगर ऐसे देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. ठीक है, what Bergman says, he says that it is the surface to volume ratio. Mathematics से थोड़ा मैं समझाऊंगा, अभी सारा समझ आएगा. It is basically depend upon what surface to volume ratio. बोल रहा है आपका Bergman. इकोनॉमी के एक एग्जाम्पल से समझते हैं. You have income minus expenditure is equivalent to saving. ये ठीक है, इनकम है, एक्सपेंडिचर हुआ कुछ और क्या हुआ, सेविंग आपकी. फॉर एग्जाम्पल योर इनकम इज 50K, एक्सपेंडिचर इज 30K, व्हाट विल बी सेविंग 20K. Am I clear? If I increase the income, it's 10 lakh, it is 10 lakh. Your expenditure is very high, extravagant, it is 8 lakh, it is what will be the saving? Is it more? Yes. So this is Bergman's rule. Bergman rules बोलता है body is large, but the capacity of the body to store energy is very high. It will radiate the heat, no doubt, because the body size is more. It will give out more heat. But compensating to that fact कि इसकी energy में, इसकी body में कितनी energy store होगी, that is less. Body size increased, expenditure became from 30 to 8. Still we are left with 2 lakh because our body is so big that we accommodated more energy. हालांकि Allen's rule खाली अगर हम अप्लाई करें, Allen's rule says that more the body size or the length or whatever it is, the more is the heat loss. Bergman rule says the more the body size, the more is the ability of the organism to store energy. There will be considerable heat loss, उसमें कोई दो राय नहीं है. But whatever is compensatory left after that will be more if as compared to अगर body का size क्या होता, small होता. समझ में आ रही है बात? Mathematically we can have this mathematical expression like, suppose there is a cube. One cube is having, cube के सारे sides क्या होते हैं, same. एक cube का side है 2, इसका मतलब सारे side क्या है 2. दूसरा cube मैंने लिया, इसका side है 10, इसका मतलब सारे side क्या है 10. What is the surface area of a cube? 6a square. This is the formula. What is the volume of the cube? A cube. Am I clear? This is mathematics, simple वाला. 6a square. पहले इस क्यूब का सरफेस एरिया निकालते हैं. सरफेस एरिया 2 2 जा 4, 6 4 जा 24 is the surface area. इसका वॉल्यूम 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. Am I clear? इसका सरफेस एरिया 10 10 जा 100, 100 into 6 600. ठीक है, इसका 10 into 10 100 into 10 1000. That is the volume. Am I clear? What is the surface area to volume ratio? Surface area to volume 8 3 जा. Am I clear? What is the surface area to volume ratio? 0. Which has the less surface area to volume ratio? Bigger size. Bigger size has less surface area to volume, so less heat will be out. This is the mathematical representation of Bergman's rule. Less surface area to volume ratio is in bigger size than in smaller size. So with this concept Bergman says there will be less heat exchange. अगर ज्यादा भी होगा फिर भी वो फायदेमंद है, क्योंकि बॉडी अगर बड़ी होगी उसमें ज्यादा फैट स्टोर. प्लस higher latitudes में you don't have availability of food. The competition is very high. Bigger body will give you advantage over your competitors. Am I clear? Yes, sir. Do you understand?